Hello everyone. I hope all of you are doing well and enjoying my classes. Also, it's very important to share your comments and let me know if you like my video or not. So, in today's class, we are going to learn about subfields of accounting. What are the different branches of accounting? Now, the question arises why we are having different branches of accounting and what are the different branches of accounting. So, just to give you a brief, in the last class, we learned about who are the users of accounting information. We saw owners, shareholders of the company, tax authorities, management, or the board of directors, etc. etc. So everyone is using the financial information in a different way, which help them to understand how the company is performing, and they should able to use that information for their own purpose. That's why we have a different branches of accounting where we are going to learn what are the different branches of accounting and how it's helping the different stakeholders who are actually using the financial information of the company. So let's learn about the subfields of accounting. First branch of the accounting is financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है ये हमने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कि पूरे अकाउंटिंग को हमने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया था। दे वेयर वी अंडरस्टूड कि अकाउंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measurement of financial transactions in a monetary terms, then recording, classification, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating to the users of the financial information. That is a financial accounting. It is a traditional form of accounting. यहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या होता है? यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, profit and loss account हम बनाते for a certain period in which we have done a business, and then we are producing the balance sheet which reflect the financial position of the business as on a particular date. तो ये जो हम बनाते हैं ये अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं, और ये जो दिस इंफॉर्मेशन इज यूज बाय द ओनर ऑफ द कंपनी, हमारे जो ओनर होते हैं और यू कैन से शेयर होल्डर, they are actually using the financial information to understand what is the profitability of the company, how the company is performing, what is the balance sheet position of the company. So owner हुए shareholders of the company, then banks भी यूज करते हैं, हम बैंक से भी शेयर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शेयर करते हैं अगर हमने लोन ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर रखा है, आवर कस्टमर्स और सप्लायर्स etc. They are using the profit and loss account and balance sheet to understand the financial position of the company and how the company is performing. So this is one of the this is a traditional method of accounting and original form of the accounting process. Now the second subfield of accounting is the management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग बनाते हैं वी आर शेयरिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी so that they will take a better decision which will help the business to grow. That comes under the purview of management accounting. Here what we are doing, what type of information management need? Definitely management want to understand how I am performing, in which product I have more profit, in which area or in which city I'm making more profit, where I'm making loss, what they need to do to expand or to scale the operation of the business. So management need to take the decision about the expansion of the business or about the expansion of their product and services which they are producing. So they are using the management accounting for analysis purpose. So let's take an example. We are going to understand with an example. Here mainly we are doing the ratio analysis, but let's take an example.
Suppose I am producing the certs. The business of cert, the original business of our which RS Limited was doing. So suppose we are producing two varieties of cert, just for the sake of understanding. Cert 2. Here I'm cost price of the cert, the cost of production which we are doing is approximate. It's coming here. Suppose 500, and here when I'm producing the cert, I'm having 250. And when it comes to selling price, when I'm going to market and selling the cert, here I managed to sell the cert only with a 750, and let's here I'm able to sell the cert at 600. So here our profit is 250, and here I have a profit of 350. ये प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो हियर वी हैव 100% प्रॉफिट और यहाँ पर हमें 140% का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सी हाउ दे कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एनालिसिस करेगा कि विच सर्ट दे शुड प्रोड्यूस मोर, सर्ट वन या सर्ट टू। यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देखा है, बट जब मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो वो केवल प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखती है, वो देखती है कि कौन से एरिया में ये बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ है, कवरेज है, कौन कौन से सिटीज में कवरेज है, हम कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो दे आर वेरियस एस्पेक्ट विच दे कंसिडर मैनेजमेंट, जो फॉल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका फोरकास्टिंग, कैश फ्लो, ब्रेक इवन, दे आर मेनी अदर पैरामीटर्स विच कवर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब आप एडवांस में कोर्स करोगे दैट टाइम, और अगर आप तो आपके पास एक सेपरेट चैप्टर ही होगा, सेपरेट सब्जेक्ट होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। So obviously here आप बोल सकते हो ratio analysis is also one of the main parameters which help the management to take the decision and also where they need to spend their energy. Besides that, they use the cash flow, fund flow, forecasting, budgeting, area of coverage, everything to decide what strategy they should adapt for their business. So this is called management accounting, one of the branch or the subfield of accounting. Third one we should say about tax accounting. टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग हम यहाँ पर देखा जाए तो टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं टू डिटरमाइन द टैक्सेबल प्रॉफिट। सो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स कांस्टेंट होते हैं, वो चेंजेस नहीं होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी रूल्स कांस्टेंट होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टैक्स अकाउंटिंग एवरी ईयर रूल्स चेंज करती है, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है। गवर्नमेंट पास एवरी ईयर द बजट बिल एंड द फाइनेंस बिल, एंड वहाँ पर वो कुछ कुछ चेंजेस टैक्स में करती है। तो हमें जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को टैक्स के पर्पज के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। अगर वो बोलती है इस एक्सपेंस को इंक्लूड करना है तो हम उस एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे, अगर वो बोलेगी इस एक्सपेंस को एक्सक्लूड करना है तो हमें वो एक्सपेंस को एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं for the income tax purpose, and then we are paying the tax on that basis. So tax accounting where we are following the income tax rules and guidelines and calculate the taxable profit, and accordingly we are paying the tax. And obviously here when we are calculating the taxable profit, we are using our financial accounting, the profit which we calculated through financial accounting, हम उसी प्रॉफिट को उठाकर अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन रूल्स लगाकर एडजस्ट करके टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पे टैक्स प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट वी आर सबमिटिंग टू द टैक्स अथॉरिटीज। सो दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, वो इवेल्युएट करता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस विच वी आर ऑफरिंग इन द मार्केट। इट कैलकुलेट द कॉस्ट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हुआ, जो हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करने में लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड और टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ दे कैन कंट्रोल द cost of the production. Also,
It also pinpoint cost product cost accounting के through management also understand कि how much we are incurring on wastage or the leakage or any type of defect during the manufacturing process or the marketing process. What type of strategy they need to adapt for improving the for reducing the cost of the product or for reducing the defect or the leakages. So cost accounting again, it's for the management to understand what strategy they should adapt for improving, for determining the sale price of the product, for improving, for reducing the cost of the product, and to control the wastage and defects. Now the next, after cost accounting, we are having another one is cost accounting. Let me erase this one. Cost accounting. Accounting. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, वो मेजर करती है कॉस्ट जो वो इनकर करती है जब भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है, सेलेक्ट करती है, हायर करती है, ट्रेनिंग देती है और फिर डेवलप करती है उस एम्प्लॉय को, सो दैट दे विल एबल टू प्रोवाइड द सर्विस टू देयर क्लाइंट और डू द जॉब फॉर विच दे गॉट हायर। तो इसके लिए कंपनी एक कॉस्ट इनकर करती है एट अ डिफरेंट स्टेजेस। नाउ कंपनी आफ्टर वॉट एवर कॉस्ट दे इनकर फ्रॉम द रिक्रूटमेंट से लेकर फाइनल ट्रेनिंग देने के लिए, वो उस कॉस्ट को लेती है और फिर कंपेयर करती है व्हाट इज द वैल्यू द एम्प्लॉय इज जनरेटिंग फॉर द कंपनी, और वो कंपेयर करती है द वैल्यू द एम्प्लॉय जनरेटिंग फॉर द कंपनी एंड द कॉस्ट incurred by the company on the employee from end to end perspective। और फिर ये मेनली एचआर के इंटरेस्ट का डेटा होता है एंड द टॉप मैनेजमेंट वेयर दे वांट टू नो हाउ मच वैल्यू वी आर जनरेटिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड व्हाट इज द फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये नाम से ही क्या इंडिकेट करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग, जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में इट इज मेनली कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकरेक्टली रिप्रेजेंट करके बैंक से लोन ले लिया हो, फ्रॉड मैनिपुलेट नंबर्स को मैनिपुलेट करके अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में दिखाकर स्टॉक प्राइस में जंप हो गया हो, और मे बी वो कंपनी के पैसे को इनडायरेक्टली या इलीगल काम में भी यूज कर रहे हैं, या उस काम में यूज कर रहे हैं जिसमें उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में है सत्यम कंप्यूटर्स। आई डोंट नो आप में से किसी को सत्यम कंप्यूटर्स नाम आपने सुना है, but this is a company almost 10 or 12 years back। कंपनी ने इनकरेक्ट वे में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेट किया, इनकरेक्ट वे में ट्रांसफ़र किया मनी को एंड यूज़ किया पर्सनल पर्पस के लिए, शेयर प्राइस के वैल्यू इन्फ्लेट कर दिए थे, और फिर उस पे जब हमने फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया तो पता चला दे हैव मैनिपुलेटेड विद द fund, they have used the money for the personal purpose, or they have used the company money to illegal proceeding, also invested in the property also। So that is come under forensic accounting, जहाँ पर हम ये potential जो crime किया है उसका evidence ढूंढने की कोशिश करते हैं। Then the next accounting which is more very much prevalent nowadays, it's called green accounting। Green accounting, व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके हम इसमें से रिड्यूस करते हैं इम्प्यूटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट। ये क्या होता है, आजकल अगर आप देखो, वी आर वेरी मच टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन कंजर्व द एनवायरमेंट, हाउ वी शुड प्रिजर्व द एनवायरमेंट।
तो ग्रीन अकाउंटिंग इज अ कंसेप्ट जहाँ पर ये मेजर करते हैं कि मैंने अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव डैमेज द एनवायरनमेंट एंड to what extent I have managed to replenish the environment. So the difference between them is covering under the environmental cost. This is very much prevalent nowadays. There are many companies like Unilever, L&T, they are using the green accounting to understand that what is the net profit they are having through the traditional way, and if we consider the environmental factors, then what is my imputed environmental cost. Actually it's very difficult to determine to what extent I am using the environment. तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या नहीं है कि हम पता कर ले कि ओके हाउ मच कॉस्ट टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव डैमेज द एनवायरनमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, बट वो कुछ एस्टिमेट करते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगाकर, एंड देन दे आर रिड्यूसिंग द इम्प्यूटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड डिटरमाइन ओके व्हाट इज माय green profit. This is called green profit, which means I have excluding the cost from my net profit to understand okay what is the profit which I have actually earned. So this is also one of the subfield of accounting. And then the last subfield of accounting is called fiduciary accounting. Fiduciary accounting. This is mainly followed by the trust. ट्रस्ट के संग होता है जब हम ट्रस्ट बनाते हैं तो वहां पर ये अकाउंटिंग फॉलो होता है. देन अनदर एग्जांपल इज सपोज उनके टेक केयर करने के लिए पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है एंड गार्जियंस आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ माइनर एंड माइनर स्टेट अंटिल दे आर नॉट रीचिंग 18 years of age. तो दैट ऑल्सो कम अंडर फिडुशियरी अकाउंटिंग जहाँ पर हम सेकेंड पर्सन अपॉइंट करते हैं जो में प्रॉपर्टी और बिजनेस की देखभाल करता है, बट दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी पर्सनल गेन और प्रॉफिट थ्रू their business what they are managing. So that come under fiduciary accounting. So अब अगर हम quickly recap करें what are the subfields of accounting we read. Financial accounting, where we are working on the traditional way to prepare the profit and loss and balance it of the company, and we are having a different stakeholder to which we are communicating. Then management accounting, which help the management to take the decision. Just to be very clear, management accounting is used only for the management for the decision making purpose. We never publish management outcome or management accounting outcomes to the external stakeholders. Then we are having a cost accounting जहाँ पर हम ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने असर्टेन करते व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ वी कैन how we should control the cost or how we should reduce the cost of the product, and at the same time what should be the price of the product as per the cost incurred to produce a good. We learned about tax accounting कि हमारा टैक्स अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर द गवर्नमेंट, सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर टैक्सेशन पर्पस फॉलोइंग द टैक्स रूल्स और टैक्स अकाउंटिंग रूल्स. देन वी कम अंडर द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जहाँ पर हमारा in a layman terms we are saying that okay we have to see what is the value generated by the employees and the cost we incurred for the employee, and the difference is called profit. Beside that we just learned about the forensic accounting, which we through which we analyze whether the company is involved in any crime or if they are utilizing the money in a for the wrong activity or they are doing any fraud. Fiduciary accounting, which is mainly used by the trust or the legal guardian appointed for the minors. And finally we learn about the green accounting, that how we can calculate the how we can calculate the green profit. I hope आप सबको मेरी क्लासेस अच्छे लग रहे हैं. अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.